welcome. You're watching Money 9. I'm Sakshi Batra, and on this show, we talk all about stock markets. Now, markets are having a dream run right now. To talk more about what should you be doing as investors in the current market run, I have with me a very special guest joining in. With me is Mr. Varun Malhotra. He's the founder of Edge Institute for Financial Studies, and he joins in on this edition of Market Masterclass. Varun, thank you so much for taking our time for us. It's great to have you with us on Money 9 Market Masterclass. And you have been an investor for last about 2 decades. You've been speaking to so many people through your YouTube channel, through the many webinars that you continuously keep posting. You've been connecting so many new investors, first-time investors to stock markets, helping them to kickstart their journey towards financial freedom. So I'm sure this conversation is going to be an interesting one for all those investors who really want to take that plunge, looking at the current record run of the stock markets as well. So let me kickstart by asking you that stock markets for beginners can also be, a lot complicated for first-time investors especially. And right now, when we are seeing that the stock markets have had this stupendous run at an all-time high, many investors are also feeling that FOMO, that only if I could participate and take that pie and enjoy the benefits of the rally that we have been seeing. Wanted to ask you, for those investors still out of the or still sitting on the sidelines, is it the right time to enter markets? So I think the most important thing here to understand for all the viewers is that they don't have to look for a particular best time or best day to invest in stock markets. They can start investing on any given day. Now, when I say that, what I mean is that if you're planning to achieve or accumulate wealth for a goal that is about, say, 5 or 10 years away from now, and you are going to achieve that through a systematic investment plan, there is no good or bad day. You can start it even today. Now, why I say that is, now, assuming the markets are at its peak right now and you start investing through a fixed amount through a SIP, and even if the markets go down and collapse and you keep investing with that same amount of money every month, you would be able to buy more units when the markets go low. So which is the concept of dollar cost averaging or rupee cost averaging. So I don't think viewers have to worry about where the markets are, what are the is the market expensive or cheap. It is very important to understand what Peter Lynch says, and he keeps on saying that far more money is lost in the anticipation of the fall rather than the fall itself or a correction itself. So as long as SIP is concerned, I don't think they need to wait if their goals are 5-10 years or slightly more than 7-8 years away from here. As far as lump sum is concerned, I think the viewers need to educate themselves better. The chances of going wrong can be slightly higher for know-nothing investors. So lump sum might be tricky, but if you're starting an SIP, is absolutely okay. So don't worry about a good or a bad time. Just get into the market in anticipation of fall. If you are staying out of the markets, that may not be the right strategy, is what Varun really is saying. But let me take this step a little further. Okay, most of the viewers now, after listening to you, have thought that, okay, whether it is a high time, markets are expensive, overvalued, never mind, I'll at least start by investing via SIPs, small money, small amounts of money, 500 rupees, 1000 rupees is what I will start off with in my investments. But where do I put that money? Should you select a basket of stocks, or should you invest that in mutual funds? And even in mutual funds, there are so many varieties out there. For a first-time investor, everything becomes too overwhelming. How do you really decide where do I put that first 1000 rupees if I want to start investing? So I think we have been very clear on that part for last 11 years now. We start saying by you need to understand that the easiest way to participate in India's growth story is a plain vanilla low cost index fund, a nifty index fund. And you can buy it from any AMC, any asset management company which has an index fund, which has a low cost index fund. I don't see any debate in that. See, the problem is, and it has to be a plain vanilla index fund. So I remember when we started talking about index fund about 11 years ago, a lot of people laughed at us and they said this concept will not work in India. Today, the most astonishing thing is all the mutual funds have their index fund. And the another problem that has started is they have started to create fancy mutual funds. Now, when I say fancy mutual funds, you basically know that index funds have a very low expense ratio. So companies do not make a lot of money. So they come out with some fancy
say fancy index funds so that they can start charging higher. But I don't think that a know-nothing investor should try to do something like that. He should basically invest in an index fund for a long period of time, a SIP in an index fund, and they would be able to do better than most of the fund managers. Now, when I say better than most of the fund managers, there will definitely be some funds which might do better than the index, but I don't think it makes sense to look for them, because when you try to find the best funds, you might end up buying the worst fund. That is the problem number one. The next problem is that even if you find a good fund and though performance keeps on changing, sometimes a particular fund does well and then you have to shift to other fund or another theme. If you keep on shifting your funds every 5 years, you have to basically sell and now pay a tax of 10%, even if it is a long-term thing. So even if a mutual fund gives you a percent higher, when you keep on shifting, you lose a lot of money by paying taxes, and that can have a huge impact on your portfolio in the long run. So if you're holding an index fund for a long period of time, I think you would do better than most of the fund managers. Yeah. So I wanted to just ask you at that point, for a lot of investors out there, it gets very confusing to understand whether an exchange traded fund and an index fund, are they same things? Are they different things? How do I, because all these jargons become very, complicated for them to understand. What is the simplest way of going and, deciding that, okay, this is the best index fund for me, simple to understand, and this is what I should start off with? So basically, ETF, a Nifty ETF or a Nifty index fund achieves the same goal. It basically replicates the returns of index. There are just two different ways of buying an index fund. You can either buy an index fund through an AMC, then we call it as an index fund, or if you buy this very same fund on an exchange, which is called as ETF, exchange traded fund, the same fund is now called as an ETF. So I don't think there is any problem in buying any one of them. You should be okay with it. The only thing that I have seen in the last 10, 11 years is if you are new to stock markets, if you don't have a demat account, if you don't have a trading account, it is better to stick to an index fund because you do not require all these things to start buying an index fund. But the other problem is when people buy ETF, their tendency to buy and sell is very high. So if you buy an index fund, the probability that you are going to hold it for 10, 15 years is very high. And if you buy an ETF, the itch that you have to buy and sell is so high that you would not be able to hold it for a long period of time and you would not be able to benefit from the power of compounding. So I think if you are new, index funds would be better. ETFs might be slightly cheaper, but index fund have a slight advantage in terms of making you slightly more inactive. ओके, सो स्टार्ट कीजिए सिप्स के साथ और स्टार्ट कीजिए इंडेक्स फंड्स के साथ, और मार्केट्स को टाइम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट्स चाहे हाईज पर हो या लोज पर हो, अगर आप सिप्स फॉलो कर रहे हैं, एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने के लिए, तो लंबे समय में आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। और एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर वरुण जी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको निवेश की तरफ बढ़ना है। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू, दिस इज अबाउट फंड्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट, द ईजीएस्ट एंड the simplest way of starting your investments and participating in the stock market journey and the returns that they give as an asset class. But in the last 1.5 years of the kind of boom that we have seen in the markets, we've also seen about 1.4 crore new demat accounts open. So many more new retail investors have entered the fray. There is a trend of DIY investments. I want to do it myself and I want to see, because I've read a bit and I want to participate there. So for all those investors still wanting to take things in their own hands, what would you suggest? Should they go for intraday trading? Should they seek long-term investments? ये कैसे डिसाइड करना चाहिए? अगर एक रेगुलर इनकम कोई ढूंढ रहा है उसके लिए, या फिर कोई अगर फाइनेंशियल गोल्स के साथ अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को लिंक करना चाहता है उसके लिए? So the first thing that you need to understand is that stock markets are not meant for active income. अगर एक्टिव इनकम कोई यहाँ से कमा सकता होता तो कोई आपको पढ़ा नहीं रहा होता, कोई आपको दवाई नहीं बना रहा होता, nobody would have been working anywhere. So I think the Prime Minister would have decided to introduce this course rather than creating employment. So I think this is the biggest problem, that most of the beginners think that this is a way to make money on daily basis. In fact, आपने सिर्फ इंट्राडे की बात करी, there is another theory जहाँ पे आते हैं लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने आ जाते हैं. So what you need to understand here is कि
then people are making money around you. It is so easy to get attracted to all those things. Yes. आपको अगर मैं डेरिवेटिव में इंट्राडे से पहले अगर डेरिवेटिव बताऊं, because I can see lot of youngsters getting into that Yes. these days and it can be very dangerous. सबसे पहले आपको समझना है what is a derivative. Derivative is very very similar to an insurance product. Now what is an insurance? Insurance is, you don't buy an insurance to make money. You basically buy an insurance to hedge. Similarly, when you buy an option, you have to use it, if you want to use it for hedging your risk, not for making money. So I think बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं. उसमें प्रॉब्लम क्या है? Now you would see some of your friends that they are making money in derivatives. तो देखिए मार्केट में ऐसा है, कोई भी अगर कोई बेट करता है that the markets are going to go higher or lower, 50% तो राइट है ही. So there can be a time when they can be right for a year or 2 or 3 years and they would make a lot of money. But when they go wrong, they will lose. So Warren Buffett keeps on saying, some people learn in third standard that no matter how the big number is, when you multiply it with zero, it becomes zero. So derivatives, intraday, leverage, these are not the right things to them. And people like us don't feel good because हम बहुत लोगों को educate करते हैं, but सब लोग जाके ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि derivatives से हर दिन पैसा कमाया जा सकता है, I तो intraday से कमाया जा सकता है. That is not the right way to do. एब्सोल्युटली. कुछ लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट्स में, अपने आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेरिवेटिव से आगे, इंट्राडे से आगे, लेकिन उन लोगों को ये पता है कि अगर मैं निवेश करूंगा तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए करूंगा. जैसे कि आपने बताया कि वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर आप कोई स्टॉक चुन रहे हैं तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए. ऐसे ही कई लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर्स को कैसे शामिल करूं. वो मल्टी बैगर सिलेक्ट कैसे किया जाता है. जब हम ये देखते हैं कि जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला इंडिया में, इन सब के पोर्टफोलियोज में देखते हैं कि मार्केट्स चाहे कैसे भी हो लेकिन इनके स्टॉक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता है. तो ऐसा लगता है कि इनके पास वो कुछ हीरे हैं जो कि हमारे पास नहीं है. तो वो मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है? So I think सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी आप मल्टी बैगर ढूंढते नहीं है. You just basically buy a great company. कभी कभी कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कि आपकी जो कंपनी है उसको रेगुलेटरी फायदा मिल जाता है, या कोई जैसे लॉकडाउन हो गया तो उसमें इंटरनेट कंपनीज को फायदा मिल गया. बट यू डोंट बेस्ड योर डिसीजन बेस्ड ऑन कि ये मल्टी बैगर बनेगा. आपको एक ग्रेट कंपनी खरीदनी है. अब आप ग्रेट कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले तो वॉरेन बफेट जैसे बोलते हैं, वी लाइक टू बाय कंपनीज व्हिच हैव सम ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यानी कि अगर कोई इनसे कुछ खरीदता है और अगर उनका कॉम्पिटिटर प्राइस सस्ता भी कर देता है तो भी कोई ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि कस्टमर वहां से नहीं जाता. जहां पर ऐसा ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दिखता, वहां पे आपको देखना है कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो सारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उस इंडस्ट्री में कौन सा बिजनेस बाकी कॉम्पिटिटर से अपने मार्जिन लगातार 10 साल 15 साल हाई रख पाता है. So if you are able to keep your margins higher for 10-15 years, it basically means that you have created some kind of a moat. मोट को जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो आपने वो मोट क्रिएट कर लिया है. तो पहले तो एक ऐसी कंपनी ढूंढी है जो 10-15 साल में ज्यादा चेंज नहीं होने वाली. फिर वंस यू अंडरस्टैंड दैट, आपको देखना है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से यू हैव टू डू अ डीसीएफ. तो पहले तो आप सब इन्वेस्टर्स को ये समझना है दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड दैट, आप कभी इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते. तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग समझ के उनके कैश फ्लोज देखने हैं, और वो जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, क्योंकि कंपनीज प्रेडिक्टेबल हैं, क्योंकि हमने जो बिजनेसेस लिए हैं वो स्टेडी हैं, उनके फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको बोलते हैं डीसीएफ. इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू. एब्सोल्युटली. तो मल्टी बैगर्स की खोज ऐसे नहीं होती. जो ग्रेट कंपनीज, ग्रेट बिजनेसेस हैं, अगर आप उसे शामिल करेंगे, सही समय पर शामिल करेंगे, वो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियोज पे चार चांद लगाते हुए नजर आएंगे. वॉरेन बफेट की भी बहुत सारी तमाम जो आपको मंत्रास हैं वो भी मिलते हुए यहाँ पर नजर आए हैं. एक और सवाल मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी, वो ये कि कई नए निवेशक जो अभी स्टॉक बाजार में आए हैं इस चकाचौंध को देखते हुए, वो ये भी देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लासेस, एसेट क्लासेस भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज. अब ये लगातार जो पॉपुलर हो रही है मिलेनियल्स के बीच में, इसको देखते हुए क्या राय आप देना चाहेंगे जो लोग अभी भी स्केप्टिकल हैं उनके लिए, क्योंकि इंडिया में अभी भी रेगुलेटेड नहीं है, उसको लेकर काफी डिबेट चल रही है. क्या क्रिप्टो करेंसीज लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक सही निवेश साबित हो सकता है? जाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए या नहीं, ये बताइए. So I think I would start with a statement or a Warren Buffett quote that public opinion is not a substitute for thought. तो लोग क्या सोचते हैं इसका मतलब आप सोचना बंद कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं. तो let us try to understand cryptocurrency की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है.
the first thing that we need to understand is the supply of money in the economy. Economy के अंदर कितना पैसा होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, this control should always be with RBI. It should always be with the central bank. अब बहुत सारे क्रिप्टो फॉलोअर्स और क्रिप्टो फैंस जो हैं वो ये बोलते हैं that giving so much power to a central bank कि वो डिसाइड कर सकें वैल्यू कितनी है, it is enormous power जो नहीं देनी चाहिए और उसके डिसएडवांटेजेस हैं. दो आई एग्री कि उसके डिसएडवांटेजेस हैं, बट आई थिंक क्रिप्टो फॉलोअर्स और फैंस जो हैं वो इसका जो एडवांटेज है आरबीआई को इतनी पावर देने का, उसको कई बार वो ओवरलुक कर देते हैं. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वो पावर क्या है और उसकी क्या जरूरत है और क्यों क्रिप्टो करेंसीज इन सेंट्रल बैंक्स के लिए बहुत डेंजरस चीज हो सकती है. There are in the economy there are always going to be booms and bursts. कभी मार्केट ऊपर जाएगी, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कैन बिकम हाइपर इन्फ्लेशन, इट कैन बिकम इनटू अ बबल. उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो मनी की सप्लाई मार्केट से कम कर देते हैं ताकि बबल ना बन पाए. सिमिलरली जब डिफ्लेशन होता है तो भी क्या करते हैं कि कोई बाय नहीं कर रहा, कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो दे क्रिएट लिक्विडिटी इन द मार्केट सो दैट वो जो नॉर्मल एक्टिविटी से नीचे आ गए हैं आप उसको ऊपर ले जाएं. अब आपको ये समझना पड़ेगा ये बूम एंड बस्ट कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का प्राइमरी गोल होता है. अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को मेन स्ट्रीम करेंसी बना दिया एंड एवरीबडी कैन इशू अ क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिएट लॉट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, तो ये जो बूम एंड बस्ट को कंट्रोल करने की पावर है सेंट्रल बैंक की वो खत्म हो जाती है. दो आई अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो के पीछे जो टेक्नोलॉजी है दैट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब उसके पीछे खास तौर पे जब आप ब्लॉकचेन बोलते हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड मेरे ख्याल से उसको अडॉप्ट करके सेंट्रल बैंक अपनी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर सकती है. बट इफ दे क्रिएट अ क्रिप्टो करेंसी दैट विल नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट. करेंसी विल ऑलवेज बी अ प्लेस टू पार्क मनी, इट विल नॉट नेवर बी एन इन्वेस्टमेंट. तो सेंट्रल बैंक जरूर मेरे को लगता है जो क्रिप्टो के पीछे टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेगी कि उसके बहुत एडवांटेजेस हैं. फॉर द स्केर्सिटी ऑफ टाइम आई विल नॉट गेट इनटू दैट. उसको लॉजिस्टिक्स में यूज किया जा सकता है, उसको ड्राइवरलेस कार्स में जो ऑटोमेटिक कार्स होंगी वो इंफॉर्मेशन कैसे आसपास कम्युनिकेट करेंगी उसमें यूज किया जा सकता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी. इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी. जैसे चेक इज अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, बट इसका मतलब मार्केट में चेक बिकने लग जाए ऐसा नहीं है. चेक इज जस्ट अ प्रोसेस टू डू दैट. वैसे ही मेरे को लगता है इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है इट इज अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस, उसको यूज किया जाना चाहिए बहुत जगहों पे. बट सेंट्रल बैंक की पावर ऑफ इशूइंग मनी एंड टेकिंग द मनी, सकिंग द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, ये अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी. और मुझे लगता है सेंट्रल बैंक्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंड दे विल फाइंड अ वेरी suitable way to cut cryptocurrency down to its size in a democratic way. Okay, it can be risky to invest in cryptocurrencies, लेकिन स्टॉक मार्केट्स में रिस्क के साथ साथ आपको एक बेहतर एसेट क्लास मिलता है जहां पर रिटर्न्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको सिस्टमैटिक वे में, डिसिप्लिन्ड वे में एक नॉलेजेबल जो एक्शंस लेने हैं. और साथ ही साथ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड्स के जरिए निवेश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में, एक पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं. ये पूरा सार आपको इस शो में वरुण जी ने बताया. बहुत बहुत शुक्रिया वरुण. इट वाज अमेजिंग टू speak with you and seeking all the insights on stock market. I'm sure all the viewers who are first time investors who want to start their investment journey in stock markets would have benefited in a big way. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you so much. And with that, we wrap up this edition of Market Masterclass for you, and we keep getting you such interesting conversations so that you can benefit and you can take the informed decisions about your money, manage your money in the best way, and also your investments in stock markets. Thanks a lot for tuning in for now.